Can you see the screen right now? Yes, sir. Okay, good. Fine, thank you. So we were discussing about equatorial type of climate. Okay. So let us write down few things on it. Okay. We could not write in the last class, right? हमने कुछ लिखा नहीं था ना? Did we write something on equatorial type of climate? I don't think we wrote, right? Please write down. Okay. Equatorial type of climate is found between 10° north and south latitudes, between 10° north and south latitudes, full stop. It is the zone of convergence of northeasterlies and southeasterlies. It is the zone of convergence of northeasterlies and southeasterlies, comma. After the convergence, vertical ascendance of winds occurs. Vertical ascendance of winds occurs, due to which thick cumulonimbus clouds form. Spelling is on your board, okay? Thick cumulonimbus clouds form full stop. These are vertical clouds spanning across 600 meters to 9,000 meters in elevation. (600 meters to 9,000 meters in elevation), comma, bring thunder and lightning accompanied by heavy rainfall. Bring thunder and lightning accompanied by heavy rainfall. Bring thunder and lightning accompanied by heavy rainfall. Full stop. Equatorial regions are the areas of double peak rainfall and
4 p.m. showers and 4 p.m. showers are the areas of double peak rainfall, and 4 p.m. showers full stop. This latitudinal belt, this latitudinal belt receives direct rays of the sun. This latitudinal belt receives direct rays of the sun in March and September, in March and September, comma, due to which, due to which maximum rainfall occurs in April and October. Maximum rainfall occurs in April and October. In April and October, which is famously called double peak rainfall, which is famously called double peak rainfall. Which is famously called double peak rainfall. Full stop. In these regions, after the full stop, in these regions, cloud formation occurs. Cloud formation occurs up to 4 p.m. during the day. Up to 4 p.m. during the day. Comma. Intense evaporation occurs. Intense evaporation occurs evaporation occurs from the morning hours until late afternoon. From the morning hours until late afternoon. From the morning hours until late afternoon. Due to high sun's insolation. Due to high sun's insolation. INSOLATION. High sun's insolation, comma, post 4 p.m. Post 4 p.m. Heavy rainfall occurs, which continues. Heavy rainfall occurs, which continues throughout the night until morning. Throughout the night until morning. Full stop. Throughout the night until morning. Full stop. Change your paragraph. Okay, it's the next paragraph.
These are the regions of. These are the regions of. These are the regions of. Maximum sun's insolation. These are the regions of maximum sun's insolation. Maximum sun's insolation, comma, the direct rays of the sun fall in equatorial region. The direct rays of the sun fall in equatorial region 2 times in a year. 2 times in a year. Two times in a year. Comma, because of which intense evaporation occurs. Intense evaporation occurs, leading to cloud formation, leading to cloud formation almost on a daily basis, leading to cloud formation almost on a daily basis. Full stop. Despite receiving maximum sun's insolation, despite receiving maximum sun's insolation, comma, receiving maximum sun's insolation, comma, these are not the regions of maximum temperature. These are not the regions of maximum temperature because these are not the regions of maximum temperature because nearly half of the day, nearly half of the day nearly half of the day cloud formation occurs. Nearly half of the day cloud formation occurs. Full stop. Nearly half of the day cloud formation occurs. Full stop. Thick clouds block sun's insolation. Thick clouds block sun's insolation, comma, thereby reducing daily average temperature, thereby
reducing daily average temperature, full stop, even during peak months, even during peak months, even during peak months of summers, even during peak months of summers, comma, a temperature of 27 to 30 degrees centigrade is observed. A temperature of 27 to 30 degrees centigrade is observed in April and October, in April and October, in April and October, full stop. However, high relative humidity is recorded. High relative humidity is recorded high relative humidity is recorded of nearly 80 to 90% in summers, of nearly 80 to 90% in summers, which which provides a feel of which provides a feel of 35 to 40 degrees centigrade of temperature, which provides a feel of 35 to 40 degrees centigrade of temperature, full stop. Such conditions are such conditions are enervating in nature. Spelling is on the board. Such conditions are, ये देखिए यहाँ पे, enervating. Such conditions are enervating in nature, which are not conducive, which are not conducive for spelling is here, which are not conducive for mental and physical activities, which are not conducive for mental and physical activities, which are not conducive for mental and physical activities. Full stop. Because of high moisture content in the air, because of high moisture content in the air,
high moisture content in the air, comma, the sweat does not dry. The sweat does not dry, which causes one to feel exhausting, which causes one to feel exhausting. Spelling is on the board. Okay. Causes one to feel exhausting. Is this clear as of now? Yes? Clear है? बताइए. Is it okay? Yes, sir. सबको? सबको ओके है बेटा? बताइए. Shall I move forward? I'm asking something. Yes, sir. बाकी Yes, sir. बाकी सो रहे हैं? Did you watch the recordings during these last 3-4 days? Recordings देखा आप लोगों ने? Recordings देखा आप लोगों ने? हाँ, sir. ये एक ही बच्चा है मेरा हरेंद्र, यही बोलता रहता है बस. बाकी तो ऐसा लग रहा है आई एम टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स राइट नाउ. व्हाई इज इट सो? Angeline, you don't worry, it's the first class and we'll get familiarized slowly. What about others? Nazia, Nagma, Wilson, Seema? Okay until now? Still not answering. Finally. तुम लोग का माइक काम नहीं कर रहा है क्या? Okay. You make this online class, very one-sided. If you don't speak, all right. Let's move forward. See, we are discussing about equatorial regions. Okay. Now we have understood the climate. Okay. Let's come to natural vegetation of equatorial regions. Okay. थोड़ा सा response ठीक रखिए बेटा आप लोग ना. See, natural vegetation, when we talk about equatorial regions, see, one we know
one thing for sure that these are the regions of heavy rainfall, right? यहाँ पे 150 सेंटीमीटर्स टू 250 सेंटीमीटर्स का एनुअल रेनफॉल होता है, राइट? और इसकी वजह से the forest cover is dense and thick. अभी जो फॉरेस्ट कवर होता है इक्वेटोरियल रीजन्स में, इट हैज हाई बायोडाइवर्सिटी. डेंस एंड थिक का मतलब है द बायोडाइवर्सिटी इज मोर. What do we mean by biodiversity? Very simple thing. Flora. Flora means plants and trees. Okay, flora. Plus, because of high density of plants and trees, even animal numbers are high in equatorial regions. Fauna is animal, right? So both flora plus fauna. Because these are the regions where every month we have rainfall, and we have peak of rainfall in April and October. Okay, peak of rainfall in April and October after the spring equinox and autumn equinox. Okay, so spring equinox occurs abhi kal hi hua hai. Yesterday was the date of 21st March when spring equinox occurred. And the next time the direct rays of the sun will be on equator will be 23rd September, right? So September और मार्च के बाद जो आपका अप्रैल एंड अक्टूबर में रेनफॉल होती है वो काफी हैवी होती है. This is one. So this is the peak of rainfall, but otherwise also, since evaporation continues in these regions, right? So rainfall happens every year, every month. So उसकी वजह से the biodiversity in these regions is also very high. पहला जो biodiversity का example है वो ये है कि the floral biodiversity is high, meaning the density of the plants and the trees along with the number, the variety of plants and trees is high, and because there is high density of plants and trees, the animal density is also high, the biodiversity in terms of animals. Okay, when we talk about equatorial regions, there are 3-4 things which we have to understand. Is that because there is high floral density, the trees generally form a canopy. You understand the word canopy? What is canopy? It is nothing but it is the top surface of the trees due to which ground surface is not visible from an aerial view. इसको बना लीजिए मेरे साथ. Ground surface is not visible from an aerial view. क्या होता है ना कि इतना ज्यादा ट्री कवर है, इतना ज्यादा डेंसिटी ऑफ ट्रीज है कि ऐसा लगता है कि ट्रीज एक दूसरे के ऊपर क्लाइंब हो रहे हैं. So what is canopy? It is the top surface of the trees due to which ground surface is not visible from an aerial view. This is the only forest cover in the world where the density of the forest is so high. अब देखिए, since there is canopy, even the sunlight
sunlight is not able to penetrate. Sunlight is basically blocked by sunlight is blocked by the canopy. Yes. तो अगर सनलाइट ही सरफेस तक नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा? सनलाइट इज वेरी एसेंशियल फॉर प्लांट एंड ट्री ग्रोथ. तो अगर वो सरफेस तक नहीं पहुंच पाएगा तो यहाँ पे जो अंडर ग्रोथ होता है ना, अंडर ग्रोथ किसका होता है? द स्मॉल स्मॉल ग्रोथ ऑफ ग्रासेस, bushes on the land will be less. और इसी को the growth of the grasses and the bushes on land we call it undergrowth. Right? Did you understand this point? Yes or no? Yes, sir. क्या मतलब है इसका? सनलाइट के ब्लॉक होने की वजह से आपका ग्रासेस और बुशेस का ग्रोथ कम क्यों हो जाता है? बिकॉज क्या नहीं हो पाता? एक वर्ड मुझे बोलो, क्या नहीं हो पाता? कौन बोल रहा है ये? चलो अब तो आवाज आई किसी की फाइनली. मुझे लग रहा था मैं पता नहीं किसको पढ़ा रहा हूं. थैंक यू. फोटोसिंथेसिस के बहाने आप लोग बोले तो सही. फोटोसिंथेसिस, राइट? सो कोई भी प्लांट का ग्रोथ, ट्री का ग्रोथ खाली रेनफॉल से नहीं होता, उसको सनलाइट की भी जरूरत पड़ती है. और सनलाइट क्या क्या करता है? इट ट्रिगर्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन विच द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट is formed and grows. The plant grows into a tree or a bigger plant, right? तो अगर सनलाइट ही ब्लॉक हो गई कैनोपी से तो अंडर ग्रोथ यहाँ पे कम होती है. यहाँ पे ग्रासेस नहीं है, यहाँ पे बुशेस कम है, ग्रासेस कम है, लेकिन यहाँ पे ट्री डेंसिटी और वेराइटी ऑफ ट्रीज बहुत ज्यादा है, राइट? So this is one of the major characteristics when we talk about equatorial type of climate. Number one. Now number two, so one is canopy. Number two, यहां पे we will find majorly जो सबसे ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, there are four varieties of trees. Okay, one is mahogany, second is rosewood, third is greenheart, and fourth is dyewood. You can please note it down. Okay, this is the four major variety of trees which dominate equatorial forest. Mahogany, rosewood, greenheart, dyewood. अब इस फॉरेस्ट को, ये जो ये ट्रीज बनाते हैं, इस फॉरेस्ट को जनरली बोला जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एवरग्रीन? एवरग्रीन का क्या मतलब होता है? सर लीफ शेड नहीं होती, वेरी गुड. एवरग्रीन का मतलब है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होती, बट हाँ, यू आर राइट 90%. द लीफ शेडिंग occurs only once in 5 years.
5 साल में एक बार हो जाता है, ठीक है ना, 5 साल में एक बार हो जाता है, लेकिन बहुत कम होता है। तो और होता क्या है कि एवरी ट्री हैज ग्रोन इन अ डिफरेंट टाइम पीरियड, तो सबका लीफ फॉल एक साथ नहीं होगा। तो इसलिए ऐसा लगता है ना कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इज ग्रीन ऑल द टाइम, different trees shed their leaves at different time periods, right? So leaf shedding occurs only once in 5 years, because of that it appears as if the equatorial forest is green all the time. Okay, देखिए, so this is number one here. Number two, equatorial forest is the region of epiphytes. It is the region of epiphytes and parasites. क्या होते हैं ये एपीफाइट्स एंड पैरासाइट्स? Epiphytes are those plants which require the support of the host to grow, which require the support of the host to grow. What are parasites? Parasites are those plants which consume the host to grow. दो अलग अलग चीजें हैं, और इन दोनों को एसेंशियली हम लोग क्लब करते हैं एक सिंगल कैटेगरी में, जिसको बोलते हैं क्लाइंबर्स। आपने देखे हैं क्लाइंबर्स? अगर आप किसी हैवी रेनफॉल रीजन में जाओगे एंड इफ यू नोटिस एनी बंगलो और एनी हट काइंड ऑफ प्लेस देयर, यू विल सी इफ इट इज सराउंडेड बाय ट्रीज, कोई ना कोई क्लाइंबर उसके ऊपर चढ़ जाता है, द प्लांट्स विच रिक्वायर सपोर्ट, और वो क्लाइंब करते रहते हैं फिर, दे आर spiral kind of plants. Have you seen such plants? देखे? मेघालय में देखे आपने? Have you been to Meghalaya? Obviously many of you would have been, right? हरेंद्र, तुमने कहाँ देखा है? अपने गांव में देखा है कि कहीं और देखा है? ये क्लाइंबर्स उन्हीं जगह में पाए जाते हैं जहां पे रेनफॉल ज्यादा होती है, राइट? और when we talk about biomes, we are talking about equatorial forest as the regions of epiphytes and parasites. Is it okay? ये बना लिया आप लोगों ने? लिख लिया सबने? Yes, sir. Okay, good. Okay, please write down इसके नीचे, in equatorial regions, comma, due to heavy consistent rainfall throughout the year, due to heavy consistent rainfall throughout the year, the biodiversity in flora and fauna is high. The biodiversity in flora and fauna is high. Full stop.
Full stop. It is also due to maximum sun's insolation received. It is also due to maximum sun's insolation received on an annual basis. On an annual basis. It is also due to maximum sun's, SUN apostrophe S, maximum sun's insolation received on an annual basis, which triggers photosynthesis, which triggers photosynthesis. Which triggers photosynthesis. Full stop. However, once the density of the trees becomes higher in these regions, once density of trees becomes higher in these regions, in these regions, a canopy develops on the top surface of the trees. A canopy, spelling is on the board, green color में लिखा हुआ है. A canopy develops on the top surface of the trees, due to which sunlight is not able to penetrate much, due to which sunlight is not able to penetrate much to the ground surface, resulting in lesser undergrowth, of grasses and bushes, resulting in lesser undergrowth of grasses and bushes. Full stop. Evergreen forest cover is found in equatorial forest. Evergreen forest cover is found in equatorial forest where leaf fall occurs only once in 5 years. Leaf fall occurs only once in 5 years. And since every tree grows at a different time period, and since every tree grows at a different time period,
at a different time period, comma, it appears as if equatorial forest is green all the time. It appears as if equatorial forest is green all the time. Full stop. Full stop. It is the region of epiphytes and parasites. It is the region of epiphytes and parasites which are essentially clubbed in the category of climbers, which are essentially clubbed in the category of climbers. Comma, the former one requires the support of the host to grow. The former one requires the support of the host to grow, and and the latter one, LATTER, the latter one latter one consumes the host to grow. Consumes the host to grow. लिख लिया? Done? Yes, sir. Very good. अब I will ask you a question. ठीक है? ठीक है. आपने सब कुछ देख लिया. What you have seen is यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा है, यहाँ पे सनलाइट भी ज्यादा है. My question to you is, are equatorial region soils suitable for agriculture? Are equatorial region soils suitable for agriculture? What do you think?
यहाँ पे हम लोग व्हीट, राइस, शुगर केन, कॉटन, टोबैको उगा सकते हैं? कैन बी? बताइए, ट्राई करिए। हाँ सर, थैंक्स। ओके, हु एल्स? ये क्वेश्चन आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मोर आंसर्स। सर, कविता, धृतिशा, नो, व्हाई नॉट? व्हाई नॉट नगमा? व्हाई नॉट? व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर हम फॉरेस्ट कवर को रिमूव कर दें तो क्या हम कोई क्रॉप का प्लांटेशन कर सकते हैं? Yes or no is okay, but what civil services ultimately demands is the reason behind it. थोड़ा ऊपर लेवल पे आना पड़ेगा अभी। यस और नो से काम नहीं चलता सिविल सर्विस में। बताइए। यस, इफ द आंसर इज नो, व्हाई इट इज नो? Sir, I think क्योंकि the forest is the हम्म 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 they're very old, so our roots of the atmosphere हम्म। जिसकी वजह से I don't think कि वहाँ पे plantation will be suitable. नहीं, तुमने बहुत अच्छा सोचा है रितिशा। यू हैव थॉट वेल, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट द आंसर। अच्छा सोचा है आपने कि फॉरेस्ट ओल्ड है, बहुत सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर से बारिश हो रही है। देखिए, समझिए इसको। हाँ, सो द आंसर इज नो, बिकॉज इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का जो सॉइल है, दे आर वन ऑफ द इनफर्टाइल सॉइल्स ऑफ द वर्ल्ड। इनफर्टाइल। रूट्स का प्रॉब्लम नहीं है धृतिशा। आजकल तो क्या है कि मशीन्स, क्रेन्स, इतना टेक्नोलॉजी इतना एडवांस कर गया है कि रूट्स को भी निकाल के फेंक देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम यहां पे है कि ये जो इक्वेटोरियल सॉइल्स होती है ना, इनका इनफर्टिलिटी ज्यादा होता है। और अब वो हम एग्जामिन करेंगे कि वो इनफर्टिलिटी ज्यादा क्यों है, डिस्पाइट हैवी रेनफॉल, heavy sunlight, right? Number one, what we need to know in equatorial regions is that these soils are clubbed under a larger category of soils which are called latosols. Soils का क्या नाम है? Latosols. These are those soils which are leached. देखिए, समझते हैं इसको, ये क्या होता है लीचिंग। द वर्ड इज लीचिंग। चलिए, व्हाट इज लीचिंग? सपोज ये हमारा टॉप सॉइल है, फॉर एग्जांपल ये टॉप सॉइल लेयर है, ठीक है ना? यहां पे बेसेस होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, phosphorus, potash. आई एम जस्ट राइटिंग फ्यू ऑफ द बेसिस, राइट? बेसिस कौन से होते हैं जिनका पीएच वैल्यू ज्यादा होता है या कम होता है? बेसिस का पीएच वैल्यू कम होता है कि ज्यादा होता है?
सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये क्या है? बेसिस। एक होता है एसिडिक। तो व्हेन वी से समथिंग इज एसिडिक, डज इट मीन द पीएच वैल्यू इज हाई और लेस? बताइए। एसिडिक लेस होता है, बेस हाई होता है। एसिडिक लेस होता है और बेसिक हाई होता है, राइट? कौन बोला ये? धृतिशा? सर अंकिता। अच्छा अंकिता, वेरी गुड, ठीक है ना, वेरी गुड। बेसिक जो केमिकल होता है उसका जो पीएच वैल्यू है दैट इज लेस, दैट इज मोर, सॉरी। और जो एसिडिक होता है उसका पीएच वैल्यू लेस होता है, ठीक है। हम बेसिस को एक और टर्म से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं एल्कलाइन। हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड? The presence of alkalis is more. What does it mean? The soil is basic or the soil is more alkaline. कहने का मतलब है कि इस सॉइल में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस का क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है। एक तो ये है नंबर वन। नंबर टू, सॉइल्स में आयरन भी होता है, सिलिका भी होता है और एल्यूमिनियम भी होता है। आयरन है, सिलिका है। व्हाट इज सिलिका? सिलिका इज नथिंग बट सैंड, ओके, सैंड पार्टिकल्स। आयरन भी है, एल्यूमिनियम भी है सॉइल में। वैसे ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, राइट? अब देखिए, जिन रीजन्स में रेनफॉल ज्यादा होती है वहां पे क्या होता है, ये जो पानी है ना, ये किसको कंबाइन करेगा? H2O will combine bases, and when it combines bases जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेश, तो what it forms is oxides of bases। क्या बनाता है? ऑक्साइड्स। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, सोडियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेश। और जब ये ऑक्साइड्स बन जाते हैं ना, विच आर हाईली डिसॉल्वेबल इन वाटर, ये ऑक्साइड्स बनने के बाद ये जो बेसिस हैं दे डू नॉट रिमेन स्टैटिक, दे स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स वर्टिकली। और जब ये वर्टिकल मूवमेंट करते हैं डाउनवर्ड्स, व्हाट हैपेंस इज these bases reach the lower layers of the soil और टॉप सॉइल को छोड़ देते हैं। और इन लोअर लेयर्स को वी कैन कॉल सबसॉइल, मतलब the layers of the soil which are existing beneath the topsoil, okay? तो बेसिस ने टॉप सॉइल छोड़ दिया, टॉप सॉइल ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड द ट्रीज। बेसिस ने कैसे छोड़ा? पहले बेसिस ने कंबाइन किया किसके साथ? वाटर के साथ। क्या बनाया? ऑक्साइड्स बनाए। और ये ऑक्साइड्स क्या होते हैं? दे आर हाईली मूवेबल, दे लीव द टॉप सॉइल एंड दे रीच द सब सॉइल। तो जहां सॉइल ने बेसिस को छोड़ा, टॉप सॉइल ने, वहीं पे क्या होता है? सॉइल बिकम्स स्लाइटली एसिडिक। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बेसिस के साथ साथ ये जो आप सिलिका देख रहे हैं ना, जो आयरन के साथ लिखा हुआ है, ये भी ऑक्साइड बहुत जल्दी बना देता है। सिलिका डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला इज SiO2। और सिलिका डाइऑक्साइड क्या होता है? इट इज ऑल्सो लीच्ड, मीन्स इट मूव्स डाउनवर्ड्स। यहां से सिलिका भी चला गया, यहां से पोटेशियम भी चला गया, फास्फोरस भी चला गया,
मैग्नीशियम भी चला गया, कैल्शियम भी चला गया, सोडियम भी चला गया। ठीक, क्या बच गया आपके टॉप सॉइल में? दो ही चीजें। कौन सी दो चीजें? आयरन एंड एल्यूमिनियम। But are they enough to bring about higher fertility in the soil? बताइए, yes or no? बोलिए, ट्राई। मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं कि जो बेसिक सॉइल्स होती हैं, बेसिक सॉइल्स आर मोर फर्टाइल। ओके, वो सॉइल्स जिसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस ज्यादा होता है, नंबर वन। नंबर टू, acidic soils are less fertile। ये आप दोनों स्टेटमेंट लिख लीजिए। एसिडिक सॉइल्स का मतलब है दो चीजें, एक तो ये है कि लैक ऑफ बेसिस, उसमें बेसिस कम है, और दूसरा है ये वो सॉइल्स हैं जिसमें क्लोराइड्स और सल्फेट्स की मात्रा ज्यादा होती है। द क्वांटिटी ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स इज हाई। नोटेड, लिख लिए? और इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है? बेसिक सॉइल्स आर मोर फर्टाइल, एसिडिक सॉइल्स आर लेस फर्टाइल, ठीक है? अब इस डायग्राम पे वापस आते हैं तो हमने एक चीज देखी कि what we are left out is with only iron and aluminium in the top soil। बेसिस चले गए, बेसिस कहां चले गए? सब सॉइल में चले गए, लेकिन सब सॉइल में जाने के बाद दे विल नॉट contribute to the growth of the plants and the trees। That is the problem। And this process of losing of oxides of bases by the topsoil is essentially called leaching। और यही जो सॉइल्स लीच्ड होती हैं, इसका कारण क्या है? हैवी रेनफॉल। और इन्हीं सॉइल्स को क्लब किया जाता है एक कैटेगरी में जिसको बोलते हैं लैटोसोल्स। अब सुनिए, जब तक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में ट्रीज और प्लांट का डेंसिटी हाई है, तब तक इनकी रूट्स ने सॉइल को टाइटली हेल्ड किया हुआ है। यस, इनकी रूट्स ने सॉइल को टाइटली हेल्ड किया हुआ है। लेकिन जैसे ही हम ट्रीज को रिमूव करेंगे, प्लांट्स को रिमूव करेंगे, तो क्या होगा? सॉइल लूज हो जाएगी, क्योंकि रूट्स वहां चली गई। रूट्स क्या कर रही थी ट्रीज और प्लांट्स की? वो उसको पकड़ के रख रही थी, राइट? लेकिन द मोमेंट वी रिमूव द फॉरेस्ट कवर, व्हाट विल हैपन इज द सॉइल विल लीच डाउन एंड द प्रोसेस ऑफ लीचिंग विल गेट एक्सेलरेटेड, बिकॉज अब रूट्स नहीं बचा पाएंगी सॉइल्स को। और अगर रूट सॉइल को नहीं बचा पाएंगी तो जितना बचा कुचा बेसिस है वो भी खत्म हो जाएगा। आप इक्वेटोरियल सॉइल्स में एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर? अगर आपको करना है तो आपको सोडियम फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, बहुत सारे फर्टिलाइजर को डालना पड़ेगा, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर को डालना पड़ेगा, तभी ग्रोथ होगी। क्योंकि
लीचिंग की वजह से लैटोसोल्स लूज फर्टिलिटी. They have been able to support a dense forest cover because this has been existing for millions of years. But the moment we remove this dense forest cover, what will happen ultimately is the soils will get devoid of fertility. Is this point clear? समझ में आया ये सबको? लिखो, ठीक है? Write down. It is a myth that equatorial soils. It is a myth that equatorial soils it is a myth that equatorial soils are high on fertility are high on fertility, but the truth is the truth is these soils which are essentially known as but the truth is these soils which are essentially known as latosols, which are essentially known as latosols, are low on fertility, are low on fertility. Full stop. The soils are heavily leached. The soils are heavily leached since rainfall is higher in these regions. Since rainfall is higher in these regions. Rainfall is higher in these regions. Full stop. The bases react with water and form the bases react with water and form dissolvable oxides, dissolvable oxides, which are leached down, which are leached down. And thus, the topsoil becomes devoid of the bases, and thus the topsoil becomes devoid of bases.
Full stop. Also, silica forms oxides. Silica forms oxide with water. Silica forms oxide with water, which is also leached, which is also leached to the subsoil, which is also leached to the subsoil, comma, the topsoil then is just left with iron and aluminium. The topsoil is then just left with iron and aluminium, which are not sufficient to make equatorial soils fertile, which are not sufficient to make equatorial soils fertile. If natural vegetation is removed from an equatorial forest, if natural forest is removed from an equatorial forest, from an equatorial forest, comma, the leaching will get accelerated, due to which the leaching will get accelerated, due to which due to which any remaining bases will also exit the topsoil. Any remaining bases will also exit the topsoil. And thus, only with excessive fertilizers, only with excessive fertilizers, comma, equatorial soils can be brought under agriculture. Equatorial soils can be brought under agriculture. अब एक चीज और देखिए इसमें, ये लिख लिया सबने? ओके, क्लियर? You have written this point, right, everyone? Basic soils are more fertile, acidic soils are less fertile. लिख लिया ना? अब एक चीज देखिए, आपकी जो इक्वेटोरियल सॉइल्स हैं उसमें टॉप सॉइल में हमको क्या मिलता है? दो चीजें, ठीक है? अब इसमें भी डिफरेंस समझ लीजिए। अगर
rainfall is 150 to 200 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो क्या होता है, और कंसिस्टेंटली अगर ये रेनफॉल होगी, सॉरी 150 टू 250 सेंटीमीटर्स, अगर कंसिस्टेंटली रेनफॉल होगा तो आयरन एट वन पॉइंट इज ऑल्सो लीच्ड। लेकिन टू लीच एल्यूमिनियम, ठीक है, टू लीच एल्यूमिनियम रेनफॉल ग्रेटर देन 250 सेंटीमीटर्स इज रिक्वायर्ड। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका में हमको पता है, ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये कौन सा कंट्री है यहाँ पे? कौन सा कंट्री है कौसर? अरे अफ्रीका में नहीं है, ठीक तो बोल रही थी तुम, ब्राजील यही तो है। ब्राजील है, बिल्कुल सही बात है। यू नो ब्राजील का क्या डिस्टिंक्शन है कि इट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर। डू यू नो दिस? कारण, ये जो आपकी बेल्ट है ना, ये वाली, ये इक्वेटर यहां से पास करता है, ये जो पूरी बेल्ट है, यहां पे काफी हैवी रेनफॉल होती है, इन एक्सेस ऑफ 150 सेंटीमीटर्स एनुअली मिनिमम। कारण, हमने करंट्स में पढ़ा है ना, यहां पे वार्म ब्राजीलियन करंट फ्लो करता है, और ये वार्म ब्राजीलियन करंट के ऊपर विंड्स ब्लो करती हैं, कौन सी वाली? साउथ ईस्टर्लीज, बहुत हैवी रेनफॉल लेके आती है, राइट। अब बेसिस तो लीच हो गए, सिलिका भी लीच हो गया, लेकिन इतनी रेनफॉल नहीं है कि आयरन को लीच कर दें। मैं रिपीट कर रहा हूं अपना सेंटेंस, इतनी रेनफॉल नहीं है कि आयरन को लीच कर दे, तो आयरन रह जाता है टॉप सॉइल में, और उसी की माइनिंग करके एक्सपोर्ट करते हैं। Brazil is the largest exporter of iron ore in the world, simply because northern Brazil and northwestern Brazil lie in the 0 degree to 10 degree south latitudinal belt. 0 से 10 के बीच में है ये regions, ये वाले, you see this is 0 to 10 degree south. Now these regions are subjected to heavy rainfall because of the presence of warm Brazilian current on the eastern coastline, and on this warm Brazilian current blows southeasterlies, because of which heavy rainfall occurs, enough to leach down the bases but not enough to leach down iron and aluminium. अब देखिए एक और चीज, यहां पे एक कंट्री है, येलो में देख रहे हैं, ये येलो में दिख रहा है, ये रीजन दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये रीजन येलो का? हरेंद्र, कौन सा कंट्री है ये? एक कंट्री है यहां पे गायना, आप एटलस में भी देख सकते हैं, छोटा सा कंट्री है, गायना है, सुरीनाम है, यहाँ पे छोटे छोटे कंट्री है, फ्रेंच, सुरीनाम, गायना। ये जो गायना है, इट इज वन ऑफ द नॉर्दर्न कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका। यहां ये एग्जैक्टली इक्वेटर पे लाई करता है, और ये गायना में एल्यूमिनियम माइनिंग बहुत ज्यादा होती है। यू नो द रीजन व्हाई? यहां पे आयरन भी लीच हो जाता है, क्योंकि यहां की रेनफॉल कभी कभी 250 भी एक्सीड कर जाती है, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली ऑन इक्वेटर, एकदम इक्वेटर पे, मतलब ये कन्वर्जेंस बेल्ट में है, यहां रेनफॉल बहुत ज्यादा है। वर्टिकल असेंडेंस ऑफ विंड्स अकर्स, नॉर्थ ईस्टर्लीज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आएगा,
साउथ ईस्टर्ली सदर्न हेमिस्फीयर से आएगा, दे विल असेंड एंड फॉर्म थिक क्लाउड्स एंड ब्रिंग हैवी रेनफॉल। इतना ज्यादा रेनफॉल 250 एक्सीड करने की वजह से आयरन भी लीच हो जाता है, एल्यूमिनियम रह जाता है टॉप सॉइल में, उसी की माइनिंग कर लेते हैं। और जो एल्यूमिनियम का ओर होता है उसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम कॉल्ड? बॉक्साइट। हम्म, हरेंद्र? क्या बोलते हैं? बॉक्साइट। बॉक्साइट एक ओर है एल्यूमिनियम का, उससे एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। हैवी रेनफॉल रीजन्स में बेसिस तो लीच होते ही होते हैं, आयरन भी लीच हो जाता है, एल्यूमिनियम रह जाता है। Aluminium remains on the topsoil, iron along with bases are leached. But in regions where rainfall is 150 to 250 centimeters, what happens is iron is leached. Are you getting my point? 250 से थोड़ा कम आयरन भी लीच हो सकता है, 250 से ज्यादा रेनफॉल चाहिए हमको एल्यूमिनियम को लीच करने के लिए। तो एल्यूमिनियम माइनिंग के रीजन्स हैं गायना, नॉट ब्राजील। ब्राजील इज गुड फॉर आयरन ओर। आयरन ओर को बॉक्साइट से सेपरेट करना इजी है, सॉइल से आयरन ओर को निकालना इजी है। लेकिन जिस सॉइल में आयरन और एल्यूमिनियम दोनों प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट होता है। इट इज इंडस्ट्रियली कॉस्ट, हेवी कॉस्ट प्रोसेस। लेकिन जिस सॉइल में आयरन भी लीच हो गया, वहां पे इजी है एल्यूमिनियम को बॉक्साइट के रूप में एक्सट्रैक्ट करना। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ऐसा नहीं कि रीजन किसी काम के नहीं बचे अगर एग्रीकल्चर के लिए इनफर्टाइल हैं। If they are infertile for agriculture due to absence of the bases, they are certainly good for iron or aluminium mining depending upon the rainfall. Clear? Yes, sir. Yes, sir. हरेंद्र, हाँ सर। चलिए लिखिए। Please write down quickly. One paragraph only. Such regions where excess excess leaching of the bases have occurred, such regions where excess leaching of the bases have occurred, leaching of the bases has occurred, comma, iron and aluminium are left in the topsoil. Iron and aluminium are left in the topsoil. Full stop. Iron ore is extracted when the bases have left the topsoil. Iron ore is extracted when the bases have left the topsoil. Full stop. With extremely high rainfall, with extremely high rainfall, even iron forms oxide with water. Even iron forms oxide with water, which is leached down. Which is leached down. Leaving behind aluminium in the form of leaving behind aluminium in the form of bauxite ore, in the form of bauxite ore, O-R-E. Full stop.
Bauxite then becomes easy to mine. Bauxite then becomes easy to mine. And therefore, the country of Guyana, and therefore, the country of Guyana in northern South America, the country of Guyana in northern South America is known for aluminium exports, is known for aluminium exports, which lies, which lies very near to 0 degree equator, which lies very near to 0 degree equator, whereas whereas Brazil, where Brazil, where rainfall is between 150 to 250 centimeters. Rainfall is between 150 to 250 centimeters. Comma, iron and aluminium are left on the top soil, on the top soil, and iron ore is easily extracted, and iron ore is easily extracted from such soils. Iron ore is easily extracted from such soils. Therefore, last line for today. Therefore, Brazil is the leading exporter of iron ore in the world. Brazil is the leading exporter of iron ore in the world, whereas Guyana deals with bauxite exports. Whereas Guyana deals with bauxite exports. Spelling is on the board. Guyana deals with bauxite exports. Written? Yes. लिख लिया? Done? चलिए, thank you. We'll continue tomorrow. समझ में आ गया अभी पूरा? डाउट? क्लियर है अभी? Yes, sir. चलिए, all right. We'll continue tomorrow. Okay, sir. Thank you, Arvind. Thank you, sir. Okay, thank you, Wilson. Bye bye. Continue tomorrow.